So today we are going to scrap the corona updates. So this is the worldometer site. Here is the information about the current cases, deaths and recovered. So we have to scrap these numbers, that is coronavirus cases, number of deaths and number of recoveries. So for that, first of all I will copy this link and here we will take request, import request. Okay, and I have copied that link. URL is equal to okay. तो now मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ with the help of request dot get is equal to requests dot get URL. okay, तो we have requested get request to this. तो हमारे R में कंटेंट आएगा, मीन्स इसका पूरा HTML आएगा. दिस इज द फुल HTML ऑफ दिस साइट. ओके, तो हमें स्क्रैप क्या क्या करना है. सो वी वांट टू स्क्रैप दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर. सो इफ़ यू ऑब्जर्व, सो हियर इफ मैं इधर कर्सर जैसे जैसे घुमा रहा हूँ वो नंबर पर आए. सो वी हैव टू स्क्रैप, वी आर गोइंग टू स्क्रैप यूजिंग ब्यूटीफुल सोप. So here is this class is important, main counter number. So this class is same for this, and again for this number there is also main counter number class, means death के लिए भी. और lastly जो recovered numbers है उसके लिए भी, उसके ड्यू को भी main counter number ही है. तो हम करेंगे क्या, we are going to import BS beautiful soap, that is the module जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है. ओके, फ्रॉम BS4 वी आर सॉरी फ्रॉम BS4 we are importing beautiful soap. For this you have to install pip3 install BS4 for importing this beautiful soap. तो अभी हम करेंगे क्या, एक सूप बनाएंगे. we have to create an object of that soup. So I will create an object of beautiful soap, and here we are passing, what we are passing, we have to pass this R, the text that we have got through this return. तो इसको हमें R dot text, or you can take R dot content, and lastly you have to take that HTML parser which parses the whole HTML जो अच्छा दिखाता है आपको. अभी हम प्रिंट करके देखते हैं what is printing. It means we have created that beautiful soap. Is it working or not? I think it should work. Yeah, it is printing whole HTML in the beautiful format. So now we have to scrap these numbers. Okay, for these numbers now we will find this using this class name. What is the class name? This main counter number. Okay, for that we will write here method. Okay, I will take a new variable, data is equal to yes dot find all. Okay, means find such all tags, means कौन से टैग्स फाइंड करने हैं हमें, ड्यू टैग फाइंड करना है. तो उस ड्यू टैग में क्या होना चाहिए, we have to find the due tag with class is equal to control V, no sorry मैंने कॉपी नहीं किया था, मेन काउंटर. ओके, मुझे फिर से जाना होगा, मेन काउंटर. ओके, मेन काउंटर स्लैश नंबर. ओके, सो अभी मैं डाटा प्रिंट करके देखता हूँ ये मीन्स वर्क हो रहा है क्या नहीं, वो फाइंड कर रहा है क्या नहीं उसके लिए. सो नाउ I will run the code. It should print only the dues with main counter number. Okay, yeah, it is working fine. Means जिसका class, जिसमें class main counter number है वो print कर रहा है. So here is our total cases, this is our total number of deaths, and this is our record cases. Okay, तो अभी हमें इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है. For that, okay, तो मैं करता क्या हूँ, इसको I will print टोटल केसेस. तो अभी हमें टोटल केसेस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर दैट मैं इधर ओके, फॉर दैट वी विल टेक, अभी ये एक लिस्ट है तो इस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू है
that's in this tag, in this span tag, this is the number of total cases, so we have to extract that. So this is the first element in the list, so data of 0 dot, that is the text, this is the text, so that we are taking text. And अभी वर्क होता है कि नहीं देखेंगे, I will run this code, what will it happen. Yeah, it is printing, okay, but it is going below I think. तो इसको मैं एक स्ट्रिप मेथड लगाता हूँ जिसकी वजह से वो स्ट्रिप होगा. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ओके, स्ट्रिप, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गया इसका. या इट इज स्ट्रिपिंग एंड देन मीन्स इधर जैसे हमें आउटपुट मिला था इसको स्ट्रिप करके इसके टोटल केसेस के सामने वो लगा रहा है. तो अभी सिमिलरली वी विल प्रिंट टोटल डेथ्स, एंड टोटल डेथ्स अभी हमारे सेकंड वाले पोजीशन में, इधर कॉमा है तो दिस इज आवर सेकंड एलिमेंट. सो वी विल राइट डाटा ऑफ 1 डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप. ओके, तो सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी. अभी टोटल रिकवरीज लेंगे हम और इसको मैं कर देता हूँ डाटा ऑफ 2 बिकॉज दिस इज आवर थर्ड एलिमेंट. ओके, आई थिंक इट इज डन, मीन्स हमने स्क्रैप कर लिया है जो हमें चाहिए वो, आई थिंक. Why it is coming late? Yeah, it is coming. So we have scrapped the data that we wanted using this beautiful SOAP 4. Okay, if you like this, just press the like button, share, subscribe. Okay, thank you.